Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that's 011 before these numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल पूछने के लिए हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. India has achieved 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of its target, asserts Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister to launch the national portal for credit-linked government schemes tomorrow, and Brent crude oil prices rise for the third straight week, while US crude jumps for 6th consecutive week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का कल शुभारंभ करेंगे और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अमरीकी क्रूड में लगातार छठे सप्ताह उछाल दिखाई दिया। Well, now for all the details. Prime Minister Narendra Modi said India has achieved 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of its target. He said this while addressing a program on Safe Soil Movement in New Delhi on the occasion of World Environment Day today. Mr. Modi said that India's efforts to protect the environment have been multifaceted, even though the country's role in climate change is negligible. The Prime Minister also said the developed Western nations are not only exploiting more and more resources of the earth, but also responsible for the largest carbon emissions. He also said several government schemes, including Swachh Bharat Mission, Namami Gange and One Sun, One Grid, carry the message of environment conservation. He said earlier farmers were not aware of soil health, and to overcome this problem, a huge campaign was launched to give soil health cards to them. He informed that over 22 crore soil health cards have been given to farmers across the country. Mr. Modi added that in this year's union budget, it was announced that natural farming will be encouraged in villages situated on the banks of River Ganga. He said that government has also announced natural farming along the Ganga River corridor and that it will be promoted. The Prime Minister added that the government has focused on 5 key points to save the soil. They are making soil chemical-free, saving soil organic matter, maintaining moisture, removing damage due to low groundwater, and stopping continuous soil erosion. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता JS मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मंत्रा टीम को जी मेरे धीरेन्द्र सर से 2 सवाल हैं। एक सर, मैं 3 म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा हूँ। एक एक्सेस का टैक्स सेवर्स है, एक टाटा डिजिटल फंड है और एक कोटक का मल्टी कैप फंड है। ये फंड कैसे हैं,
इनके बारे में बताइए। और एक फंड मैं और लेना चाहता हूँ, मैं कौन सा फंड में ले सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। जी जी। एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो टैक्स सेविंग फंड है वो अच्छा फंड है और इसका क्वालिटी फोकस रहा है शुरू से, और इस वजह से बीच बीच में इसका प्रदर्शन कमजोर रहता है और उसी वजह से इसके लंबे समय का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। उसी तरह कोटक मल्टी कैप भी एक अच्छा फंड है जो होल्ड करना चाहिए। टाटा डिजिटल फंड एक नया फंड, रिलेटिवली नया टेक्नोलॉजी फंड है और थोड़ा ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजी फंड है, और चूंकि एक मतलब कोई भी सेक्टर फंड बहुत उतार चढ़ाव उसमें दिखता है, या तो ये बहुत अच्छा 8 महीने पहले तक ये एक बेहतरीन फंड लग रहा था, आज बड़ा कमजोर फंड लग रहा है और फिर ये अच्छा लगने लगेगा। इस तरह का साइक्लिकलिटी किसी भी सेक्टर फंड में देखा जाता है। ये एक अच्छा फंड है, लेकिन इसके लिए अगर आप तैयार नहीं है, क्योंकि जितना नया ये फंड है और जब से इसकी शुरुआत हुई थी तब से लोगों को इसमें अच्छा खासा उछाल या गेन या ग्रोथ दिखा है और पहली बार ये गिरावट का दौर है, लेकिन किसी भी सेक्टर फंड का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही रहेगा। तो अगर इसके लिए आप तैयार नहीं है तो आपको बदल देना चाहिए, और अगर आप कई सालों के लिए होल्ड करते हैं तो कुछ मत कीजिए। इसके अलावा आपके पास ये तीनों मिलाकर के तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सख्त जरूरत है, लेकिन अगर ऐड करना हो तो मेरा ये एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप एक मीनिंगफुल एडिशन होगा। Right, and let's go across to Mumbai, where we have Ashish joining us on the program. Good evening, Ashish, and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening to all of you. Yeah, I want to ask Mr. Dhiren about this AMCs, how they are get funding. What is their source of income? Is this the same which we pay the SIPs, and how they grow? What from where they get the source of income? Yeah. Okay, thank you. AMCs are in the business of making money by managing your money. So when you give 100 rupees, they charge 1 rupee annually. I'm just giving you an example, not precisely, because they are governed by the expenses that they can incur, including management fee, including their fee of managing the money. So mutual fund companies are allowed to charge all the directly attributable expenses plus charge a management fee for managing your money, and subject to certain ceiling stipulated by defined by SEBI. So assuming that a fund company can charge up to 2% in an equity fund, so every year if you invest 100 rupees, their income is 2 rupees, and that 2 rupees is not actually on 2 rupees. If they are able to grow your money from 100 rupee to 150 rupee, this 2 rupee will actually become 3 rupee. And within that, the half of that will be their expense. I'm just referring to this. A part of it will go towards sales commission to the distributor, and the remaining to operating expenses, which is the registrar fee, the custodian fee, and all other statutory regulatory costs that they incur. So that is their income. So the more money they manage, the more money they make. And they make money on two counts. One, they manage more money, they attract more. And when they do well, the money grows. And they charge their fee on the grown money. They got 100 rupee and it became 200 rupees. So now they will be charging money, the expenses on 200 rupees. This expense charge happens on a pro rata basis every day. So when the daily NAV is calculated, it is after deducting the expenses on a daily basis. So this expense looks like 1% or 1% or 1.5% annually. But a very small part, 1.5% divided by 365, or a proportion for 365 is charged every day. So that is how they make money. So if a fund company is managing money, doing well, so they benefit on three fronts. One is that when they do well, they attract more money. When they do well, they are able to charge more money on the existing, the existing money also grows. Right. Dhirendra, and before we take more calls, I want to bring in this one point which you often have been emphasizing in this program also.
that mutual funds are very tightly regulated, and there is no scope for any scam or anything. But in recent weeks, we have seen some kind of an issue in one of the asset managing companies of front running. The fund manager was suspended and eventually terminated. Is that, or should it be a cause of worry? It is quite concerning. It is. It's not a good news. It is quite disappointing in the sense that this is something which can actually go under the radar, because mutual funds are very tightly regulated on multiple dimensions. There is a safety in the design. There is a safety in the way fund companies get into the business. I'm very confident that tomorrow, if there is a problem in a fund company and if regulator wants to change the asset manager, because all our money is lying with the fund company and with the trustee company or the trustees responsible for that. So the design, the structure of the mutual fund is something that on a Friday, if the regulator decides to change the asset manager of a set of funds, it can well be done by Monday without any disruption. And all the people, their money will be safe, secure on that front. But this is something which is like pickpocketing happening. Somebody is trying to steal some money and trying to benefit from his position of knowledge, because and let me just explain what for our listeners what front running is. If a fund manager or a dealer in a fund company has decided that he has to buy some stocks worth 100 crore, and this order will be executed over the next 10 days, and he will buy it worth 10 crore every day. So this is advanced news, and if this information is known to somebody, he can benefit, because within a day, within an hour, within a minute, depending on the scale of order, prices change. Prices react to the scale of order. So somebody might benefit. Somebody might prepare beforehand with those purchases. The price will go up, and as a result of which somebody would like to sell after that fund company has placed an order. So in that sense, price manipulation could be a result of this, and that will be at the cost. Sometimes it could be, of course, now we have to wait for the investigation to really figure out how it has hurt, or the scale or magnitude, or whether it can be measured or not, the fund investors. But I think, these things are very hard to, I think one particular problem, one particular situation has actually led to such situations in recent past. Because of the pandemic, a lot of people started working from home. And when you are physically at a place, then, a lot of those controls can be exercised. But if you are working remotely, or if you are visiting office and the controlled environment is on a alternate day basis or things like that, then there would have been laxity on that front. But let's see. I'm waiting for the investigation, and it is very disappointing. And this is a very small thing. I don't think it is pointing to a big question mark on mutual fund, but it is pointing to the big question mark on the morality of some of these fund managers and dealers, which is very hard to predict, which is very hard to control. Right. और अमृतसर से हमारे श्रोता प्रेम सागर जी लाइन पे हैं। प्रेम जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए प्रेम जी। मैं अमृतसर के गांव से बोल रहा हूँ। जी जी जी। म्यूचुअल फंड की काफी बातें हो रही हैं जी। ये सुनता रहता मैं प्रोग्राम। हमें भी कुछ जानकारी दीजिए म्यूचुअल फंड के बारे में, कहाँ से लेते हैं, ये कैसे संभालते हैं, थोड़ी जानकारी दीजिए जरा। जी प्रेम सागर जी, आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में? संपर्क शायद इनके साथ। प्रेम सागर जी का सवाल मुझे समझ में है, वो मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। जी। म्यूचुअल फंड 2-3 तरीके से खरीदा जा सकता है। पड़ोस के बैंक में जाइए, या आसपास कोई म्यूचुअल फंड के एजेंट से संपर्क करें। अगर एजेंट का पता ढूंढना हो अमृतसर में, तो एम्फी इंडिया की वेबसाइट पे, जो कि आप अपने स्मार्टफोन पे देख सकते हैं, amphiindia.com पे अपना पिन कोड डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस या आपके आसपास कितने म्यूचुअल फंड एजेंट हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जरिया है
कि आज के दिन बहुत सारे ऐसे एप्स उपलब्ध हैं जिसको डाउनलोड करके आप, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं और आपके पास आधार कार्ड है और आपने पहले कभी निवेश नहीं किया है, तो एक बार आपको KYC करने की जरूरत होगी। ये करने के बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने को तैयार हो गए। एक बार आप शुरुआत में एक 10,000 रुपए का निवेश कीजिए किसी लिक्विड फंड में और 3-4 दिन के बाद आप उसको निकाल लीजिए। अब और ये दोनों चीज आपके बैंक फोन से ही हो सकता है। तो इतना करने के बाद आपको भरोसा हो पाएगा कि पैसा इन्वेस्ट कैसे होता है और निकलता कैसे है। इतना करने के बाद फिर हमें एक बार संपर्क कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआती फंड लंबे समय के लिए आपके लिए आपका कौन सा होना चाहिए। और यहाँ पर मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में लेते हैं हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra, and as always on Sundays we focus on mutual fund and related issues, and well-known mutual fund expert Dhirendra Kumar joins us over the phone line. And just to remind our phone numbers are 2331-4444, 2371-7106, and our third dedicated line is 2371-7117. And as always, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. Let's move on and take our next caller. We have Tarun joining us from Dehradun. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening to all. Yeah, I have two questions. Yeah, first question is somewhat related to the front running, which we just discussed. Let's say there is appreciation in the funds. The stocks bought, 10 stocks are there in the fund, and they are all being appreciated. How the amount which is appreciated can be verified that is being reflected in the NAV next day? I mean to say, if the fund is performing good, there must be some appreciation. So how we can verify the percentage which the stocks have appreciated, the same percentage is reflecting in the NAV? That is number one. The second question is regarding the not so known new funds. How safe is an investor if somebody likes to invest in them, apart from the performance or the track record, but if any new fund may not be able to perform, that's one thing, but how safe is an investor in terms of the money being invested? Right. Thank you. Okay. Yeah. And have the verifiability of the value of the investment held by a fund. Don't worry about that, because most of the time there are multiple parties involved in this, and you can also verify it. The one good thing about mutual fund is that they're extremely transparent on a month-end basis, and for a certain set of funds, the whole portfolio is disclosed every month or week. So if you want to, it is disclosed on a month-end basis. So if you want to calculate the worth of all the investments held by the fund on 2nd or 3rd or 5th of every month, because fund portfolios don't undergo massive change. So you will see that the percentage change that you will calculate and the percentage change that will happen in the fund will be will match, except that there will be a very nominal on the 3rd decimal point you will have, or 2nd decimal point you will have the adjustment on account of expenses. Not only that, the valuation is done many a times by the fund company through a third party. There are other companies which are doing it and informing the fund, because the securities are not held by the fund companies. Every time the mutual fund buys a share or invest in a bond, the bond holding is in a trustee account with the custodians. It is not, when mutual funds are buying shares, it is not lying in their demat account. It is happening in the investor's account and at the custodian, and the custodians are responsible for calculating the NAV. It is not happening at the fund
fund companies primarily in the business of creation of the investment idea, the launching of the fund, manage day-to-day decisions about the investment and marketing and distribution of it so that it reaches to a larger number of people. When you look at the mutual fund design, there is a registrar, and in India, of course, the registrar services can be internal to a fund company, but so far, it is external. The CAMS and the KFintech are responsible for managing your account statement, issuing of dividends, allotments, and all those things for all the fund companies. Custodians are responsible for all the purchases and sales storage, all the securities held. So when a fund decides to sell, it places an order, the dealer places an order with a broker, then those shares are, released by the custodian. It is not by the fund company. So there is an external agency mandated by the law, mandated by the regulation, and that is primarily for verifiability. Besides that, the fund companies, all these things are very regularly audited for looking at, because it is not about the verifiability of all the stocks that they own. It is primarily, are they charging the expenses all right? Because now the mutual funds are, pretty complex. Every fund comes in 4 formats. You have the direct plan, you have the regular plan, the expenses are different for regular and direct. And so things like that. And, are they doing it? Are they matching? Because if the expense of a fund exceeds the regulatory ceiling, they are not allowed to charge that. जी, और चलते हैं अब एक अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। जन समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य समावेशी वृद्धि को गति देना और सरल डिजिटल प्रक्रियाओं से समुचित सरकारी लाभ उपलब्ध कराकर विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना है। Let's take our next caller. We have Mahesh joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Yeah, sir. Okay. One thing is the HDFC, the merger. Do we need to take care anything with the mutual fund investments? And another question is, how can I have an weatherproof mutual fund portfolio? Okay. Okay. Your second question is more important. First question, the HDFC merger, HDFC Bank and HDFC Limited, you don't have to do anything. Mutual funds hold it and it will happen at their end. If you hold the shares of these two companies, still you don't have to do anything because you will get HDFC Bank shares in lieu of HDFC Limited share which you hold in a certain ratio which has been announced, and it will happen only once it is being formalized and it is after all the regulatory approvals. Then how to have a weatherproof, weatherproof portfolio? Very difficult. I think, weatherproof portfolio can be had for the long run. And for that, you need to have, I have 2-3 rules if you follow. One is that have a long-term view, which means all your investment must not be needed in the next 5 years. That should be the time frame. The other is that it should be diversified because, some sector or the other, don't concentrate it anything. Let it not be very focused because many a times, people invest in a couple of funds which are not very well diversified. Either their sector fund or a thematic fund or a focused strategy where, it is 10, 12, 15 stocks. So they do very well when in the good times and they actually collapse very badly and when the tide turns. So these are 3 things you do, and I think, make sure that, the diversification is on one more front, which is many a times I see that many investors invest all their money in few good funds of a single fund company. So if your scale has gone up, spread it over, 3-4 good diversified fund of different companies. Don't concentrate in one because, many a time these fund managers also go in and out of favor. और साहिबाबाद से हमारे श्रोता हरीश लाइन पे हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि सर ये जैसे एक्सिस बैंक चिप लेना चाहता हूँ मैं,
लेकिन एक्सिस बैंक का जो स्कैम हुआ है उसके बाद लेना चाहिए या नहीं? ओके, यस धीरेन्द्र। नहीं, आप चिंता में पड़ गए हैं और मुझे लगता है एक्सिस ब्लू चिप के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सचमुच में बहुत सारे लोग चिंतित हो गए हैं और इसकी वजह से अभी चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। और एक्सिस ब्लू चिप जैसा फंड है, लेकिन अपना निवेश रोकिए मत। एक अच्छे, अगर कुछ नहीं होता है तो एक अच्छे इंडेक्स फंड में लेकिन पैसा लगाना जारी रखिए, इंतजार। और मुझे नहीं लगता कि एक्सिस ब्लू चिप में पैसा लगाने के लिए चिंतित होना चाहिए, उस फंड में ये नहीं भी हुआ है। लेकिन एक जगह पे अगर प्रोसेस में किसी तरह का कोई ग्लिच रहा है या जिस वजह से ये स्कैम जिसका भी हमें पता नहीं है कि असल में हुआ क्या है और इसका असर क्या रहा होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे विस्तार से जानकारी मिले। Right, and before we take more calls, let's take a look at the oil scenario. Brent crude oil prices rose for the third straight week, while US crude notched a sixth weekly gain on expectations that the OPEC's decision to increase production targets by slightly more than that was planned will not add much to global supply. Both US crude and Brent hit a 3-month high above $120 per barrel. For the week, Brent settled the week up 0.2% at $119.7 per barrel, while US crude rose 3% during the week at $118.8 per barrel. और जयपुर से हमारे श्रोता दीपेंद्र लाइन पे हैं। दीपेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार। आदित्य बिरला का सर बिजनेस साइकिल फंड किस टाइप का सर फंड है, और अभी क्या सर बॉन्ड में पैसा मतलब लगाना चाहिए क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू? मुझे लगता है कि बॉन्ड में पैसा लगाने का थोड़ा समय आ गया है। हालांकि अभी हाल फिलहाल तुरंत तो अभी थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बॉन्ड में लगाने का समय इसलिए आ गया क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दरें बढ़ने की वजह से और जिस तरह का रिस्क प्रीमियम हम उम्मीद करेंगे इक्विटी में, उसके बजाय अब बहुत नीचे स्तर से बहुत जल्दी फिक्स्ड इनकम पे बॉन्ड्स में रिटर्न ज्यादा मिलने लगेगा। और ये आदित्य बिरला का ये बिजनेस साइकिल फंड, बहुत सारे फंड है जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि साइक्लिकल है, कमोडिटी, मेटल्स, और ये कई सालों तक अच्छा करते हैं और कई सालों तक अच्छा नहीं करते हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि स्टील कंपनियों के शेयर में बहुत भारी उछाल आया है, या बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा सा बदलाव आया है, और ये जो साइकिल है ये जारी रहता है, कभी अच्छा करते हैं कभी खराब करते हैं। और ये फंड इस चीज से फायदा उठाने की कोशिश करता है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें की जो कि अभी आउट ऑफ फेवर थे और अब ये फेवर में आ जाएंगे, और उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये अब रिलेटिवली थोड़ा नया फंड है, देखिए कैसा करता है। Right, we have Kashinath joining us from Chennai. Welcome to the program and put your question quickly. Hello, good evening, market मंत्री टीम सर। या जल्दी से सवाल पूछिए। धीरेन्द्र सर को मेरा नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि मान लीजिए कोई एक हजार रुपया का 15 साल या 20 साल के लिए SIP कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि SIP चढ़ते मार्केट गिरते मार्केट एक मनी क्रिएट करने के लिए SIP लंबे अवधि के लिए करना चाहिए। जी काशीनाथ जी, धीरेन्द्र जी, इनको अगर आप 2 लाइन में जवाब दे पाए समय का। नहीं, पर मैं इनका सवाल नहीं समझ पाया। इनका जरूर सवाल लेंगे और विस्तार से समझाऊंगा। जी काशीनाथ जी, तो अगले कार्यक्रम में अपना सवाल पूछें कृपया। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। And we would also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. India has achieved 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of its target, asserts Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister to launch the national portal for credit-linked government schemes tomorrow. And Brent crude oil prices rise for the third straight week, while US crude jumps for 6th consecutive week. And with that, we come to the end of this edition of Market Pulse. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Pulse.